Hello, and welcome to this very special live of the Indian squad that was announced yesterday. We thought of coming live yesterday, but it was too late, so we decided to analyze, decode the squad today. I'm joined by Devashish Sen, I'm joined by and Amit and Shah, and, Joydeep Mukherjee will be and joining that the, us. re- the reason we could not join live yesterday last night was courtesy BCCI because of the Courtesy release coming in BCCA, as 2 hours. always, as always. Let's not talk about it. It is a routine now, so we are accustomed to it. And Joydeep Yeah. Mukherjee has also joined us. But let's start with the biggest talking point from these squads. I'll come to the Australian squad later. We'll talk about Jasprit Bumrah a bit later. But coming to the New Zealand T20Is first, the return of Prithvi Shaw. It is the biggest talking point. Joydeep, I would like to start with you. How do you look at the squad? Yes, Prithvi Shaw is there, but at the same time, they have retained Jitesh Sharma. Mukesh Kumar is in the squad. Kuldeep Yadav is in the squad. So it's a revamped unit, we can say. Slowly, it is starting to take shape under the leadership of Hardik Pandya. Yeah, what I like to see is that in spite of the some players coming in, the players filling in are not left behind. The Mukesh Kumar, the Jitendras will not be left behind, which is good to see. Because often it's Right. happened that players have come into the squad and then they've gone away. I know many players who have come into an Indian team and not played and gone away. Like a Ship Shankar Paul, like a Ranodip Bose from Bengal. They've toured with teams, but they've never played in the 11. So it's good to see Right. that they're being looked after because they're obviously in the Indian team for a reason. And just because somebody is back doesn't mean you just throw them by the wayside. So good to see. राइट राइट अमित भाई पृथ्वी शॉ का कमबैक आप मुंबई से हो आप जानते हो पृथ्वी को जिस हिसाब से उनका स्टार्ट रहा था इंटरनेशनल करियर में एक प्रोडिजी टैलेंट तो है ही बट जिस हिसाब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक स्टार्ट किया था उसके बाद से फिर वो खो गए थे काफी कंट्रोवर्सीज बीच में एक सोशल मीडिया में क्लिप भी वायरल हुई थी जहाँ पे एक सीनियर जर्नलिस्ट कुछ बोल रहे थे पृथ्वी शॉ के बारे में बट उसके अलावा उन्होंने एक 300 रन जड़े वहां पे 400 रन मिस हो गया वहां पे बट फिर भी 379 के स्कोर के बाद फिर T20 स्क्वाड में रिकॉल क्या क्या कैसे देखते हैं आप इस चीज देखिए शुभायन 379 रन करना और वो भी पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी का जो एक टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं लेकिन पैर नहीं चलते उनके और खड़े खड़े शॉट्स खेलते हैं काफी लेकिन उनको खेलते हुए देखना काफी अच्छा लगता है इवन ये क्रिकेट के भगवान हम जैसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर उन्होंने खुद कहा है कि पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी को देखने उनको बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लगता है ऐसे शॉट्स लगाते हैं बेहतरीन शॉट्स एक से और 379 रन यानी कि आप देखिए कि बीबी निम्बालकर ने कभी वो अपना रन किए थे 400 रन बनाए थे और उनके कई साल बाद जो है ये रिकॉर्ड मतलब सेकंड नंबर पर पृथ्वी शॉ है तो मेरे हिसाब हाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा और जब आप यंग एज में होते हो इंडियन टीम में आ जाते हो जल्दी कैप आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं एक फ्लेम्बॉयंट जो आज की डेट में जो चीज है वो खिलाड़ियों के सर पर आ जाती है लेकिन जब पृथ्वी शॉ को टीम से ड्रॉप किया गया उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने आप को उन्होंने संभाला है और जिस तरीके से आपने इनिंग्स देखी ये बेहतरीन इनिंग्स थी और आज मेरी पृथ्वी शॉ को 5 तारीख को जो है मेरी बात उनसे हुई क्योंकि जैसे ही मुंबई का मैच खत्म हुआ सीसीसीआई पे उसके बाद वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अवार्ड फंक्शन में आए थे हमने उनसे वादा लिया था कि आप एक बड़ा स्कोर कीजिए आज उन्होंने किया भी और उससे भी बड़ी बात यहाँ बोलेगा भी मेरे साथ में है हमने थोड़ी देर पहले अजिंक्य राणे मुंबई के कैप्टन से बात की हमने पूछा पृथ्वी शॉ के क्या हाल है तो उन्होंने कहा पृथ्वी शॉ हमारे साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं यानी कि आप अच्छा देखिए ये बहुत अच्छी साइन है कि अगर आपका T20 टूर्नामेंट में चयन होने के बावजूद आप दिल्ली में जाकर के रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो क्योंकि अभी T20 को तो टाइम है लेकिन वो आपके हाँ स्टेट के लिए आप भी जाकर के खेलोगे तो मेरे हिसाब से एक बड़ा साइन है उनको खेलने मिलेगा क्या नहीं ये हमें नहीं पता लेकिन अगर उसको खेलने में मिलेगा तो मेरे हिसाब से अभी जो है वो मेंटली रूप से पृथ्वी शॉ जो है वो तैयार है ज्यादा रोशनी दे पाएंगे जॉलिप दर क्योंकि जॉलिप दर रणजी ट्रॉफी इतने दिन से क्या कर रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं और एक बतौर एक खिलाड़ी होने के नाते एक खिलाड़ी की मेंटालिटी जॉलिप दर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और हम सभी जी, को समझ अमित जी, यस जॉयदीप पृथ्वी शॉ इंडिया टीम का प्लेयर है। अभी पृथ्वी शॉ कौन सा मैच अपने स्टेट के लिए खेलेगा ये इंडियन टीम डिसाइड करेगा, वैसे ही चलता है। It's not up to Prithvi Shaw anymore. When he's not an Indian team player, he can decide what he wants to do. Once you're part of the India setup, अभी मुकेश कुमार कौन सा मैच खेलेगा, कौन सा मैच नहीं खेलेगा फॉर रणजी ट्रॉफी ऑफ बंगाल,
that is something that the Indian team will decide because it's a load management Right. and everything that comes in. So it works a little differently. Back in the day, वो लोग वनडे इंटरनेशनल के बाद रात को ट्रेन लेके आ जाते थे मैच खेलने के लिए, वो प्लेयर के ऊपर था. अभी प्लेयर के ऊपर नहीं है, उनका भी सीनियर्स का भी कंट्रोल है. एंड अ गुड बैलेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी प्लेयर थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, एकदम नहीं खेलना. बट नाउ हम इस साल देखे सूर्या खेल रहा है, हम देखे चहल Hmm. खेल रहा है. So India players are playing Ranji to be good to see. Right, right. But Devashish, as Amit Bhai also mentioned that whether he will get that chance to play or not. If we talk about the openers in the Indian team, Shubman Gill, Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad. Uh, okay, Ruturaj Training rounds. is not in. I guess Ruturaj is in the team. Ishan Kishan, Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, and you have a Rahul Tripathi as well, who Yes. can open. Although he's not seen as an opener in the T20 setup, but will or should Prithvi Shaw get a look in because we know what he can do in the span of 20-25 deliveries if he plays. Yes, absolutely. And this is the right time to draft him in the playing 11 because we have seen him play those knocks in the IPL for the Delhi Capitals. We know what he can do when it comes to T20 version. So, see, as far as Test match or one day cricket is concerned, there is traffic jam. So, how can you get in a Prithvi Shaw? But this is the right move from the selectors to get Prithvi in that T20 squad because this is the time to experiment because the T20 World Cup is still a long way, 2024. So why don't you give him an opportunity? And with this kind of form that Prithvi is in right now, this is perhaps the right time. Shubhayan. Joy, Joydita, I like to start. Let's start a debate here. We have talked about Prithvi Shaw in domestic adda a few times as well, and what he can do with the bat. We all know that. But should he get a place in ahead of the likes of Shubman Gill, Ishan Kishan, or even Ruturaj Gaikwad in that squad? Actually, I know Prithvi's got 379, but he's had a okay year by his standards. He's not been on fire this year as much as he is every other year. He's a Right. fantastic. And when you're as good as that, when you play for as long as he is, you can't match up to that standard every year. It's humanly not Right. possible. But I was just thinking every time I saw Prithvi not get big runs, I thought somebody is going to pay. I wonder who that is. It happened to be Assam. But that's what happens. जब भी रन नहीं बनते ना सब बोलते हैं यार किसी को पीटने वाला है ये वो कौन पता नहीं ये असर किसी को ऊपर पड़ने वाला है and ultimately you pray on him. Yeah, but I still feel Shubman has done really well. Ishan Kishan got a double hundred and traffic jam. Right. Well, whatever she said, Indian team. I know 20 players offhand who are fabulous cricketers, as good as some who played for India but couldn't play for India because there was no space. So it's not about how good you are; it's also about the space. There has to Right. be space. 11 can play. I will tell you some players who could not play for India just because they were just a lot of leg spinners couldn't play because Kumble was there. A lot of off spinners couldn't play because Bhaji was there. Our Right. number three played 164 Test matches. Our number 4 played 200. Our number 5 played 134, and our number 6 played 113. So in those 14, 15 years, many good players never got a chance to play for India. So it's not about how Right. good you are, but जगह भी बनना होगा. अमित That भाई is बहुत अच्छा. हाँ. That Yes, is why, Joydita. that is why once you get a spot, don't let it go. Prithvi has actually let it go. If you look at the others, has Saurav Ganguly let it go? Has Tendulkar let it go? Has Dravid let it go? Has Lakshman let it go? Jodhida, I would like to interrupt because it was a bit harsh on him because after that Adelaide 36 all out, Injury. he should have been given another opportunity, Jodhida. Let's be Of course. honest. Of After course. that Adelaide But then Zimbabwe that series, then he that deserved the controversy, place. he failed the dope test and all. It came at the Yeah. same time when he was recovering from that injury, ankle Also, injury. Right. Devashish, you've traveled a lot with the Indian team. When you're part of the Indian team, it's just not your cricket. It's also your persona that matters. Absolutely. Especially when you're a young boy. Absolutely. When you're Virat Kohli and Rohit Sharma, you will get away with a few things. But you can't be overweight at 23 or 22 or whatever he is. You can't be. People Right. are not even hitting Rohit Sharma when he's not scoring runs. They say ज़्यादा weight put on कर लिया. So for a 22-year, you have to be like everybody else. You cannot say that I want to be with Rohit Bhai. You are competing with Shubman Gill. You are competing with Ishan Kishan. That's your yardstick. तुम 10 साल खेलो इंडिया के लिए, then you can say कि हाँ ठीक है मैं I've deserved this. पर उसके लिए 10 साल खेलना पड़ेगा. Right. There's some privileges you earn. So weight is an issue with him. When you look at him, you know.
But he's a fabulous player. But if the mantra is that you have to become fit and thin, so become fit and thin. साफ दिखा है आपको सामने. Whatever issues he's had barring cricket, you sort that out. Cricket तो आपके पास है ही. Cricket तो कहीं नहीं जा रहा. अमित भाई एट द सेम टाइम ये एक डिबेट है जो कि हमने पहले भी सेशंस में किया था. T20 स्पॉट तो हमने देख लिया, बट दो बड़े नाम फिर से नहीं दिख रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली. क्या इंडियन T20 सेटअप अब इन दो बड़े दिग्गज प्लेयर से आगे बढ़ चुकी है? देखिए, ये अल्टीमेटली तो सिलेक्टर्स को ही तय करना है, लेकिन अगर लगातार 2 सीरीज में इन खिलाड़ियों को नहीं ले रहे हैं, कहीं न कहीं एक मैसेज ज़रूर जा रहा है और ये मैसेज जब से ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड टी20 होने के हम हारे थे, उसके बाद से ये मैसेज जा रहा था कि अब सीनियर्स को शायद जो है ये टीम में मौका नहीं मिलेगा और ये 2 जो श्रीलंका के सामने और न्यूज़ीलैंड के सामने जो टी20 सीरीज हुई, सीनियर्स का उसमें टीम में नाम न होना, ये कहीं न कहीं एक अंदेशा उनके लिए एक वार्निंग बेल ज़रूर है। लेकिन अगर कोई बड़ी प्रतियोगिता आती है तो ज़रूर होगा, उनको लिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सचमुच में कहें तो इनको कोई अभी सीनियर्स का नाम इस प्रतियोगिता में मुझे नहीं लगता कि आपको वाइड बॉल में छोटे फॉर्मेट में ये 3 बड़े नाम दिखेंगे। केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो अब यहाँ से चयनकर्ता जो है वो आगे की तरफ सोच रहे हैं कि अगर आप यही खिलाड़ियों को अगर आप खिलाते जाओगे तो आप नए प्लेयर्स को कहाँ टेस्ट करोगे? ये एक उनका एक फ्यूचर की टीम बनाने का उनका प्लान है। तो जैसे हमारा डिस्कशन था, एक्टिविटी नहीं है और चयनकर्ता फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हाँ बिल्कुल. देवाशीष सर, you agree with it कि Indian team has moved past the big two? Absolutely. I totally agree with Amit sir, and he's in a better place to give us more inputs because he's from Bombay, and the one thing is that we have not heard any single thing from BCCI when it comes Only Rohit Sharma did say Rohit that he Sharma has not retired. himself declared that he would like to continue in T20 format. There was no comments whatsoever from BCCI top hierarchy. So that in itself sends a strong message because see, selectors तो जाके करेगा नहीं, चेतन शर्मा लेट सिलेक्शन कमेटी जाके इसे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बैठाएगा नहीं. उनमें वो लेट्स बी ऑनेस्ट, दे डोंट, वो दम नहीं है उनमें. It's because they got a signal from the BCCI top hierarchy that they have overlooked Rohit Sharma and Virat Kohli, two of the superstar batters in India. Let's be honest. So that sends a strong signal, strong message. देखो अभी we need to move on because T20 वर्ल्ड बहुत हो गया. Because T20 वर्ल्ड कप में जो हमारा प्रदर्शन रहा, अमित was there in मेलबर्न, जो हमने प्रदर्शन किया against England, that was means क्या बोले, क्योंकि देखिए we lost against South Africa. We could have easily lost the game against Pakistan. It was a close game. Then we lost against Australia. We won against Bangladesh, and that was too also a rain affected one, a close game. So हम लोग क्या T20 World Cup में in Australia. I think the message was set as when we were knocked out in T20 World Cup that अभी चलो अभी नया दिशा में देखना चाहिए हमको, and that I think that was the stepping stone after we were knocked out in the World Cup. Shubhayan. Jayadipta, you agree? A quick comment on this before we move to the ODI spot? No, I also feel that, see, when they're players of this repute, first you got to treat them with a lot of care and respect. Okay? Because Rohit and Virat at their best are two of the best we've ever had. So that's number one. So there's a way you treat players of this repute. Number one. Number two is you also have a chat with them, find out what their plans are, what they want to do, and then you see if that sort of gels into your plans, whatever the plans of the selectors are, and the management is, and then you see how the IPL goes. You never know. The IPL is about a month and a half away. You see if they have a big IPL, anything is possible. I think this is about form. This is about form. I read an article of Murli Vijay today where he's written about how we sort of after 30 in Indian cricket, you're like a fan. So that was a chat with W.B. Raman. It is an excellent chat on Sportstar. It's a terrific chat. So W.B. keeps sending me these. So I read this, and I actually thought so. And I thought every state does that. The moment a guy is 31, and if he is not already a stalwart in the team, he says, "No, we don't want to try this guy." But I'm not so sure that's so true because Surya has become Surya after 10 years of first-class cricket. So Surya is not 19, 20. So there is a lot of boys who mature at 28, 29.
and that 28, 29, they can give you 5, 7 years, which is a lot for international cricket. Right. 7 years Joydeep, means there are two types of players, right? Early bloomer and late bloomer. There are many players who peak at 19, 20, 21, 22, but then there are players who bloom after 30, as you said about Surya. The absolutely. example was Kedar Jadhav. He has picked up very Kedar Jadhav, huh? early. The example was that will Yes, sir. You see, what is important is that you see how the player is playing, how his fitness is. Now, Virat Kohli is fitter than a lot 22-year-olds. So Hmm. age doesn't matter for me. Form and Right. fitness is what matters. That's all. The two F's. Age Right. is inconsequential. And coming back to your point, Shubhayan, I would just like to add is that definitely Mhm. there has been some discussions with Rohit and Virat as to means obviously Definitely. there were some reports where I was reading that they will be sitting down with the board officials, but then um, Chetan Sharma and co definitely had got some signals from the BCCI top hierarchy. You just cannot leave out two of your top batters from any format. True. True. I completely agree. Let's move to the ODI squad. It's a very standard squad, and I think after the team review meeting, Jay Shah did say that we have locked on to 20 players और वही 20 प्लेयर के इर्द गिर्द हमें ये स्क्वाड दिख रही है ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है उमरान मलिक मोहम्मद सिराज शमी कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल शार्दुल ठाकुर की वापसी हो रही है शाहबाज अहमद टीम में है क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं है और अक्षर पटेल अभी इस सीरीज के लिए अनअवेलेबल थे वॉशिंगटन सुंदर है फिर देन आपका हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव श्रेयस अय्यर विराट कोहली ईशान किशन शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा केएस भरत को एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा गया है मे बी वहां पे थोड़ी सी डिबेट हो सकती है बट अदरवाइज अ वेरी स्टैंडर्ड स्क्वाड व्हाट से जॉय Yeah, I think so. I think it's a very standard squad. Everybody picks their place. It's good to see Shabazz. I know Jadeja is fit. Axel is also fit in the mix. राइट Rested, looking after their players. Good to see. Good to see. राइट राइट अमित भाई योर थॉट्स ऑन द ओडीआई स्क्वाड क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान में सीरीज जीत के आ रहे हैं सो देयर कॉन्फिडेंस विल बी आल्सो हाई जी 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 बेशक बेशक ओडीआई टीम में एकदम सेट टीम है मेरे हिसाब से अभी इनमें से ही जो लड़के हैं वही जो है विश्व कप के लिए 15 खिलाड़ियों में लेना चाहेंगे और टीम मैनेजमेंट भी बारी बारी से इन खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है कि उनको सबको मैच प्रैक्टिस मिले ताकि वो अपने अंतिम 15 जो है वो टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता जो है वो मिलकर बेस्ट अपने प्लेइंग 15 जो मेंबर है वो निकाल पाए तो मेरे हिसाब से ये एकदम सेट टीम है उसमें कोई दो राय नहीं कि इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी आउट ऑफ द बॉक्स में कोई जा सकता देवाशिता वांट्स टू से समथिंग Yeah, यस मामा just इस टीम में एक ही अच्छी बात है कि शार्दुल selectors have gone with Shardul Thakur because he was not getting opportunities. He gained a lot of weight. But what I noticed in Bangladesh is to although he did not get into break it into the playing 11, but he was seen making laps and laps of rounds across the ground. Means he was conscious about his weight and he was making serious effort to reduce his weight. So that's a good thing to have happened. And we know the utility of Shardul Thakur, the all-rounder. Yes. India needs a bowler who can bat. Let's be honest here. You need a bowler at number 8. You have when you have a Ravindra Jadeja, obviously your number 8 is sorted. But then Right. you need someone who can chip in at number 9 as well. And herein Right. lies Shardul Thakur's utility as an all-rounder. So I think this is a very good move on the part of selectors to include Shardul. Yes, Joy. The only reason Devashish knows Shardul was running is because Devashish was also running behind Shardul. Otherwise, how would you know how long he ran? And both are now looking slim and fit. Absolutely, but gentlemen, let's move to the big series, the Border Gavaskar series. The squad for the first two tests were announced, and some eye-raising options there. Ishan Kishan is in the squad as a backup wicketkeeper. Maybe he could pick Gaze Bharat also in the playing 11. But after that, you have a Jaidev Gunatkar who has retained his place. But the big talking point from this series is no Jasprit Bumrah, number one, and Surya Kumar Yadav ahead of Sarfaraz Khan. So, like on social media, I've been looking like people are very upset. Why not Sarfaraz Khan, who averages around 110 in the last 3 seasons, 110 average in white in red ball format? It's crazy. Joydipta, your thoughts on the test squad? Very stable, but then Ishan Kishan is back up. No Jasprit Bumrah and Jaidev Unadkar and Surya Kumar Yadav.
Yeah, first I'll say I think KS Bharat has had a okayish first class season. Right, He's not been on fire. right, I think so. And Ishan Kishan is a gun wicketkeeper. A lot of times, right. people, there are two aspects to a wicketkeeper batter. There's the batting and there's the keeping. Now, Mhm. Ishan Kishan is a white ball keeper batsman, so is KL Rahul. But the Right, keeping of Ishan Kishan is in a different league. right, It is not in the case of KL Rahul or even a Sanju Samson for that matter. For multi-days cricket, for a test match, your keeping has right, to be of high standard. you know. So that if we play on turning tracks, we might play. So that is where Ishan Kishan scores over everybody, and KS Bharat is also very, very good behind the stumps. The only mm, problem is that KS Bharat is in the middle of a lean run for Andhra. right, He's right, not on fire. That can happen. See, as far as Bumrah is concerned, we have a World Cup in mind. I feel for what's happening because a lot of times I've been part of, team management where you feel somebody is progressing and you can see him playing, and mm, then you go 60% is okay. You go 80%. The moment you go 90, 95%, he feels I need a little bit more time right, because nothing is carved in stone. right. Okay, there's nobody can say I'll be fit by in 7 days. Like when you and I might have the same cut, but you might take 5 days to heal, I might take 8 days to heal. True. Similarly, I think that's what's happened. As far as Sarfraz is concerned, I know the amount of runs he's scoring, but you know what? Just playing the devil's advocate, even after all the runs you score, you still have to go and get runs in India A. Because Right. the But process that he he played only 3 or 4 matches for India. I eight, mean, is it a fair eight uh, innings, 8 innings. 8 innings? Yes, 4 tests, 4 or 5 tests. So what I'm saying here is now when I played professional cricket, that time anybody who played for well for the state would play for the zone, then play for rest of India, play for India. Okay. Right. Now they have a very nice India A system in place. Surya has played 4 years of India A. Right. Okay, so that is your Mhm. finishing school. So I think then in our time we saw a lot of people go from state cricket or zone cricket and go and play India and struggle. Now with the A cricket, that bridge has been gapped. Mm. But I am a huge fan of Sarfraz. I think it's only a matter of time before he scores in every version, and his time will come. His time will come. Again, who do you drop? Again, you can just keep him in the squad, but our 11 is pretty Right. fixed. So I think he's got age on his side. He has to score in every game, whether it's Mumbai, whether it's India A, whichever game he comes. When you're not in the Indian team, every game is a trial match for you. Every game. Mm. But George, an honest question, like I gave a stat of Sarfaraz's score in the last 3 years. Like 3 years, lot of matches in Ranji Trophy and other tournaments. But is it fair to judge a player after 5 or 6 or 8 innings of from India? You said it's a finishing school, it's the final step. But is it fair to judge a player from 8 failures or 7 failures after he has scored tons of thousands of runs in the last 3 years for his state side? So I'll equate that question with somebody who's come first in class 10 boards. In class Mhm. 12 board, if he's struggling, what would you do? Mm. Right, right. Fair enough. It's a pretty simple one. Mm. India is tougher Mm. than Ranji Trophy. Fair enough. So you got to Fair score enough. runs as you go along. And if you see all Right. the guys playing for India now have killed it in India. I remember one time Manish Pandey, Manoj Tiwari killed it in India. Mm. Mm. Right. Australia took, I remember, highest run getter in was Sanju Samson in the 1 days. Manoj was second. In the 4 day, it was Naman Oja, the highest run getter. Manoj Tiwari was second. You Mm. have to, and so Manoj Tiwari, Naman Oja, everybody gets a lot of runs, goes to Australia. They're also there at the top. Mm. That's important. Then you're telling the people. And after that also, Manoj didn't play, Naman didn't play. So what about them? Right. Mm. It's a tough place. I mean, Indian cricket is a cutthroat business. No, अमित भाई I, आप दोनों को जानते हो सूर्य हाँ yes Jordan please. I'm a huge admirer of Sarfraz, but I think for Mm. him, he's now doing it at one level, and I think it's only a matter of time if he plays a good Mm. 2 years of India A cricket consistently. See, right now we haven't had an India to A tour in a while. So Right. Right. Bangladesh we had where Abhimanyu got 200s. I think South he should be. Africa we had Yeah, so last. I think he should be in every India A team. For me, that is more important for him to show that I belong to the next level. Mm.
If Fair he's enough. in Very, every very if valid. he's in every India A tour, every match, whether it's 50 overs or multi days, then he can show his prowess what he can do for India. Give him a That's a valid point. give him a 2 year run. Of the runs he has scored, he deserves 2 years of India A. The moment he Hmm. does well, take him in. Is my take. वैलिड 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 इनफ। अमित भाई, आप दोनों को जानते हो, सूर्या सरफराज दोनों को मुंबई से ही आते हैं। दोनों ने, इवन सूर्या ने भी रेड बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा किया है जब भी वो खेले हैं मुंबई की तरफ से। आप इस सिलेक्शन को कैसे देखते हो? और साथ ही में ईशान किशन के इंक्लूजन के बारे में आप क्या कहते हो? क्या हम देख सकते हैं कि वो ऋषभ पंत का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शायद ईशान किशन केस भरत से पहले खेल जाए प्लेइंग 11 में? देखिए, विकेट कीपर के ऊपर जॉयदा ने जो विश्लेषण कहा वो एकदम हाँ, सटीक है। परफेक्ट है। उससे परे कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको एक 4-5 दिन विकेट कीपिंग करने वाला एक स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए, आप रन तो बना लोगे, व्हाइट बॉल में आपने रन किए हैं, लेकिन आप कीपर कैसे करो? तो जॉयदा की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। बात जहाँ तक सरफराज की आती है, मैं यहाँ पर एक थोड़ा अलग मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इनको मैंने बचपन से देखा हुआ है। जब ये लड़के 3 साल के थे, जो नेट्स में खेलते थे, तब से आज तक की उनका प्रोग्रेस मैं देखता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके की आपको एक सदी हुई इनिंग्स, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, मैं रणजी ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, देश क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी में आप स्टेट के बॉलर्स को खेलते हो, वो बात अलग है, लेकिन अभी वो मेंटेलिटी सरफराज के दिमाग में नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कोई टेस्ट खिलाड़ी बड़ी नेशनल टीम के प्लेयर्स को और किस तरीके से खेलेंगे, वो एबिलिटी फिलहाल हमें नहीं लगती। और जितने भी मुंबई के फॉर्मर प्लेयर हैं, जिनसे हमारी रेगुलर लेवल पर रणजी ट्रॉफी में बात होती है, जब उनको हम पूछते हैं कि ये नाम चर्चे में आ रहे हैं, तो वो मीडिया पर हंसते हैं। तो कहते हैं, यार आप ही बताइए कि अभी तक सरफराज उतना मैच्योर नहीं हुआ कि आप उसको सीधे टेस्ट कैप दे दें, क्योंकि काफी घिसने के बाद टेस्ट कैप मिलती है। और उसका हम्म। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसा भी बताएंगे कि मुंबई के जो कोच है अमोल मुजुमदार, इतने मैचेस के लिए, इतने रन के लिए टीम में जगह थी भी नहीं उस समय, लेकिन अमोल मुजुमदार को भारतीय का वही टेस्ट कैप वही नहीं जो मिला। वही जो चार नाम हमने बताया, 200, 164, 134 और 113, अमल मजुमदार, जी, हेमंग बदानी, शरद, रमेश, सब गए अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखिए, यही एक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने यही कहा कि जो लिखने वाले, जिनको, मतलब मैं नॉलेज की बात नहीं करूंगा, हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है लिखने का, लेकिन आप पहले उस खिलाड़ी को देखिए, उसका टेम्परामेंट कैसे है। आकर के ताबड़तोड़ शॉट लगाना, आप स्कोर बोर्ड पे देख रहे हो, 200 बना दिया, 300 बना दिया, नो डाउट बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से जॉयदा ने कहा कि आपको जाकर के पहले इंडिया ए के लिए रन करना है, इंडिया ए के टूर के लिए आप लगातार खेलते रहे। ये जितने भी खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव हमें पता है इमर्जिंग टूर पर गए थे, अंडर 25 को इंडिया को लीड कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने इंडिया ए के कई टूर खेले। अजिंक्य रहाणे, हम्म। कई उन्होंने सीरीज खेली है, बाकी भी हनुमा विहारी, कई इंडिया टूर पे गए। तो ये तमाम यू नो खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, Amit वो makes a ये very पूरे, valid point. Amit makes a very valid point because right now, Safraz is scoring his domestic bowlers. So if he goes and has a great IPL, that will also swell people. But he hasn't had a great IPL so far. He hasn't राइट। played consistently in the IPL so far. Nitish Rana had a great IPL play for India in one-day cricket. हम्म। Okay, so Ambati Rayudu played India from IPL. Ashok Dinda played India from IPL. ऋतुराज So that गायकवाड़ एंड is राहुल त्रिपाठी। somewhere go and prove हाँ। your point where international cricket is at stake. That's why I and and feel and and, and yes, man. and for Surya's case, obviously you everyone is talking about Sarfaraj, but Surya has also made his first class debut in 2010, and so हाँ, it's हाँ, been ऑफ almost कोर्स, ऑफ 12 कोर्स। 13 years now, and he averages almost 45, 44.79, almost scored 5,500 odd runs and first class runs in behind him. So he is not a mug as far as the drafting in Surya Kumar ahead of Sarfaraz Khan. It's obviously, as Joyda rightly said, you go and play and to prove your point on India Step A by step, tours, step by step, step by step step. by step. He still have age behind him. I'll tell राइट, you, एब्सोल्युटली। I'll The tell you only the case here India is that Surya's average is 40 and Sarfaraz's average, general average is 80 there. So that's why the entire comparison of why yeah, he has been but drafted in ahead of. yeah, 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 but then look at the number of matches also there, Shubhan. yeah, of course, 100%. And Surya in the last 3 years, whatever matches he has played for Mumbai, he has played in a blistering fashion and he has scored I big runs. I think I think Safraz is a phenomenal talent. He'll play for India for 10 years.
I'm just Ah, talking about his progression into international right, cricket. Progression is what I'm right, talking about. He belongs right, there. So when you right, see a young 12-year-old boy who runs the 100 meters really well, you don't send him to the Olympics. You send him to the coach to get ready. So right, they're in 10 years ready for the right, Olympics. I'm talking about the progression for him to go there. right. एक और मैं सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक बहुत ये साबित भाई प्लीज। नहीं, मैं यहाँ पर एक टीम में, जबकि मैं और मुरियद आज दिनों भर इस बारे में चर्चा कर रहे थे और हमारी उस खिलाड़ी से भी बात हुई। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अजिंक्य रहाणे को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप उनको देखें, और ये एकमात्र खिलाड़ी है जो भारत की कप्तानी कर चुके हैं, भारत के उप कप्तान थे, और ये एकमात्र खिलाड़ी रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी वो रणजी ट्रॉफी खेले थे आधा सीजन, क्योंकि फिर वो अब अपने कमिटमेंट में थे। इस साल वो डोमेस्टिक सीजन पूरा खेले हैं और अभी तक खेल रहे हैं। दुलीप ट्रॉफी में उनके 200 है, एक रणजी ट्रॉफी में 200 है, और आसाम के सामने पिछले मैच में 191 रन है। ये तीन ऑलमोस्ट डबल 100 अजिंक्य रहाणे ने बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। 2021 ज्यादा लंबा नहीं है ये बात, 2021 में आपकी बी और सी टीम लेकर के उन्होंने एक सीरीज जीताई है आपको। उनके उनका इंटरनेशनल सीजन खराब गया ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अन्य खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन पिछले 3 साल में देखें तो उनका भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। चेतेश्वर पुजारा ने जाके डोमेस्टिक में रन बनाए, उन्होंने जाके इंग्लैंड में भी रन बनाए, तो वहां पर इसलिए उनको टीम में लिया गया। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में मिला के उनके 100 कितने ये आप बताइए। तो मेरा यहाँ एक चयन समिति को एक मेरा एक बड़ा मैं इस बात में बिल्कुल मानता नहीं। आप खिलाड़ियों को देख करके अपना चश्मा बदलते हैं, तो खिलाड़ियों को कैसे देखते हैं। विराट कोहली आया तो भैया आपका ग्लासेस क्लीन है, आप उसको खेलने दीजिए, बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर करके आप खिलाए जा रहे हो। अगर और कोई प्लेयर आता है तो सिलेक्टर अपना दूसरा चश्मा पहन लेते हैं और फिर उनकी खामियां निकालते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे बड़े प्लेयर हैं, आपको उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्म में नहीं थे, डोमेस्टिक सीजन खेल रहे हैं ना, वो घर में ही बैठे हैं, तमाम मैचेस खेल रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी साइड को, और एक दुलीप ट्रॉफी में 200 बनाया, एक आपके रणजी ट्रॉफी में और एक डबल 100 है, और एक 191। तो उस प्लेयर ने प्रूव कर दिया कि मैं फॉर्म में आ चुका हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? मेरे हिसाब से उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी इन खिलाड़ियों के पास मैं 2-3 साल का वक्त बचा है, उसके बाद उनकी भी एज हो जाएगी और आप यंगस्टर्स को टेस्ट टीम में लोगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक थोड़ा मेरा जो है वो चयन करता, अगर उनको लेते तो मेरे हिसाब से जो है वो शायद इस खिलाड़ी के साथ फेयर होता। ये सवाल हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि अजिंक्य रहाणे को क्या वो डिजर्व करते थे टीम में आना। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बट अब फाइनल टॉकिंग पॉइंट के तरफ बढ़ जाते हैं। इट इज अ डायलेमा, इट्स अ डायलेमा फॉर द टीम सिलेक्शन, टीम मैनेजमेंट। केएल राहुल हैज बीन नेम्ड योर वाइस कैप्टन ऑफ द टेस्ट स्क्वाड and there is Shubman Gill joiner. Who do you pick for the opening slot in that playing 11? And Rohit Sharma is also there. Rohit Sharma, I'm keeping Rohit Sharma as your first opener, and then the battle for the second opener. KL Rahul, your vice Rohit was captain. not there in Bangladesh. Rohit was not Ah, there in yes, Bangladesh. yes. I think Abhimanyu Ishwaran after 4 first-class Oh, 100 he was missed out. absolutely. That I'm gutted for him. I'm absolutely gutted for him. absolutely. अभिमन्यु ईश्वरन, 10 of 10 रन दे स्कोर, ढेरों I'm रन बनाए, absolutely विकेट gutted for him. बनाए। तो यही मैं कह रहा हूँ, यही सिलेक्शन कमेटी अलग अलग खिलाड़ियों को देखने के लिए अलग अलग चश्मा इस्तेमाल करते हैं, यही एक मेरा मानना है। और हमने टॉकिंग पॉइंट तो पूरा किया ही नहीं। जहां तक मैं फिर से दोबारा आता हूँ, वाइस कैप्टन की दौड़ में नहीं कहना चाहता। जसप्रीत बुमराह की कौन सी इंजरी है मेरे भाई? वो तो उस पे तो हम आएंगे, उससे मैं फिनिश करना चाहता था। जसप्रीत बुमराह से तो मैं फिनिश करना चाहता था। तो अभी देखिए, जसप्रीत बुमराह के मामले में तो मैं विश्व कप से कहते आ रहा हूँ, जो वर्ल्ड कप में उनको लिया गया था, मैंने तब से कहा ये फ्रेजाइल प्लेयर है, ये केवल अपने आप को रेड बॉल और आईपीएल ये दो ही चीज के लिए अवेलेबल हो, ये बात कह दे। क्योंकि और अगर कोई आईसीसी बड़ा इवेंट आ रहा है जहां आपको बुमराह की जरूरत है, आप उसको तब भी खिलाइए, आप उसको एक छोटे मोटे सीरीज में खिलाइए। देखिए यहाँ पर एक खिलाड़ी का मजाक कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ। जब हमने एनसीए में बात की थी, तब एनसीए में हमको कहा था कि वो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए फिट हो, उसके पहले हम उसको लेना नहीं चाहते, तब तक वो 100% फिट हो जाएंगे। आपने श्रीलंका के सामने उसको अनाउंस कर दिया कि वो श्रीलंका के सामने खेलेंगे। चलिए वो 60-70-80% जैसे रोहित ने पैरामीटर बताया खिलाड़ी का, वैसा वो थे। अच्छा, अगर वो 60-70% भी अगर आपको लग रहे हैं, तो वो आपकी न्यूजीलैंड सीरीज में ना वनडे में है ना T20 में, ऑस्ट्रेलिया के सामने 2 टेस्ट मैच अनाउंस हुई उसमें भी नहीं है। तो आपको तो लगभग 25
30 दिन का गैप मिल जाता है, ऐसी आपको कौन सी इंजरी आ गई। और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है, शायद बाकी बच्चे दो टेस्ट मैच भी वो नहीं खेलेंगे। ये पूरी जानकारी हमें लगभग हम पुख्ता रूप से नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरीके से ये जो चेस का जो गेम चल रहा है जसप्रीत बुमराह को लेकर के, अगर भैया आप नहीं फिट है तो बता दीजिए। बीसीसीआई ने कभी भी किसी भी खिलाड़ी की चोट पर सामने से आके 100% बयान नहीं दिया। यही आज मैं और बोरिया का बात कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा 8-9 महीने से बाहर है, ऐसी कौन सी इंजरी 8-9 महीने से आप लास्ट बताइए आईपीएल में आप। खेले थे वो सेमीफाइनल या फाइनल में। उसके बाद आप खेले ही नहीं है, तो इतनी लंबी इंजरी, तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये ये समझ में नहीं आता कि आप किसी प्लेयर के लिए आप ये इंजरी कह रहे हो, किसी प्लेयर के लिए ये इंजरी करो, आप उसको कह देते हो कि हाँ ये अवेलेबल है, 2 दिन बाद आप कहते हो वो तो टीम में ही नहीं है, और फिर लंबे समय तक बाहर हो जाता है। तो आपने ये क्या मजाक तो नहीं बनाया, मतलब आपका सिस्टम में कहाँ लूप होल है, ये आप पहले बताइए। उसके देवा बाद आप चेंज करें, आप लीजिए जसप्रीत बुमराह को, आप बुमराह नबी से भी जीत सकते हैं, आप उमेश यादव से भी जीत सकते हैं, जडेजा उलटकर से भी जीत सकते हैं। जैसे उलटकर इतने साल बाद टीम में आए, विकेट निकाल के दिए आपको बांग्लादेश में, मतलब खिलाड़ी है, मत खिलाइए आप उसको, उसको कहिए भैया आप आईपीएल खेलिए, आप आईसीसी बड़े इवेंट के लिए, और आप रेड बॉल में अगर आप फिट हो तो खेलिए, आप अपना फिटनेस संभालिए। लेकिन ऐसा मजाक मत बनाइए, क्योंकि आप प्रेस रिलीज भेजते हैं कि वो फिट है, और फिर प्रेस रिलीज आप ही अपने जो है वो औंधे में गिरते हैं, मतलब आपने जो बोला है वही आपको झुटलाना पड़ता है। तो ये क्या बात है, ये क्या अच्छा लगता है? आपकी वर्ल्ड के नंबर की टीम नंबर 1 टीम है, आप इतना पैसा ऐसे पे खर्चा करते हो, वर्ल्ड के नंबर 1 आप डॉक्टर ट्रेनर फिजियो ले आते हो, ऐसे ही आपको रिपोर्ट बना के देते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बात को मैं काफी खफा हूँ। मैंने पिछले मेरे करियर में 25 साल में जर्नलिज्म में कर रहा हूँ, मैंने ऐसी खराब जो है वो सिस्टम आज तक नहीं देखी। तो बीसीसीआई को जो है वो ऑफिस मेरे इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अगर खिलाड़ी नहीं खेलता, जसप्रीत बुमराह बड़ा प्लेयर है, उसका फिटनेस नहीं है, मत खिलाइए उसको, आईपीएल खेलने दीजिए, रेड बॉल खेलने दीजिए, साल में 2 प्रतियोगिता खेलेगा, चलेगा, लेकिन ऐसा जो है वो मजाक मत बनाइए, क्योंकि जब से वो देवाशीष गेम आया भाई, तब से हुआ है। Amit, मैं Amit, देवाशीष Amit, दा पे जाता हूँ, Amit is क्विक in क्विक full वन। form. Amit अमित is भाई in इज ऑन full फुल फॉर्म, form. बट मैं क्विकली एकदम. देवाशीष दा क्वेश्चन टू यू। मैं तो उसी के लिए, मैं तो ये जो टॉपिक था मैंने ही रात को बताया था कि भैया इसी पर हम शो करेंगे कल, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब बॉल आए। गाइस समय कम है, समय कम है। But then देवाशीष दा, let's be honest with यस Jasprit Bumrah, because I was also having a word with Boria that because उनका अभी जो परिस्थिति है, means we need to wrap him in cotton, because देखिए जो उनका एक्शन है, टाइम एंड अगेन ही विल ब्रेक डाउन, और यही साबित हुआ ना, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड फिट, ही वाज ड्राफ्टेड इन द न्यूजीलैंड स्क्वाड, देन वो ओवर बर्डन जैसे ही उनको दिया गया, ही स्टार्टेड फीलिंग स्टिफनेस, सो ये आता रहेगा। So the biggest challenge for him is but mama, the press release which came, it said that Jasprit Bumrah is fit for the Sri Lanka series. But then we heard that Jasprit Bumrah broke down during another fitness test. So one yes. BCCI, this question is to BCCI and NCA. तो हालांकि Were they यही jumping the gun by releasing the press? हैरानी की बात यह है I कि don't think so, guys. then was he not Yes, tested, Joyda. because Yes, Joyda. When Nitin somebody, Patel, if I say tomorrow that X is Shubhayan is fit to play this game and he's getting ready, I'm doing nothing wrong. And then in the next day in the nets, if you break down, nobody can see it. In hindsight, life is a lot easier. I've seen players who have been declared fit by the physio and they've broken down. Mm-hmm. So these things happen. And like Bodia said, his action is not like Devashi said, his action is not a conventional one. He'll have issues. He'll have to live with that. He'll have to manage with that. Right, right. Fair enough. Sorry, gentlemen, I think I am having a load shedding here, so I'll bear with my audio for now. But Mama, the question to you, KL Rahul versus Shubman Gill. obviously he is the vice captain of the test squad. Ah, so you will drop a Amit, Shubman Gill who has done by phenomenally well. by how many in recent times I don't remember any cricketer जिनके लिए, so I'm not divulging too much into it. अमित भाई इशारा ही काफी है, ऐसा वाइल्ड कार्ड कहते हैं उसको, ये ऐसा कहते हैं कि You वाइल्ड कार्ड, you look वाइल्ड at कार्ड एंट्री you पीछे से एंट्री मिल जाता है। you look at the runs of Shubman Gill in the last 10 innings, and you look at KL, you get the answer.
Joydeep da, you are giving us clear signal तो to us बाद में here. तो बाद में हम लोग इतिहास में कब तक जिएंगे? इतिहास में अगर जीना है तो ये इतिहास वाली बातें सचिन प्लेयर अजिंक्य रहाणे के साथ क्यों नहीं होती है? No, आप vice मुझे captain will बताइए। अमित भाई definitely रिसेंटली अभी देखिए पाकिस्तान ने देखिए अपने वाइस vice captain कैप्टन will definitely play. बट जॉय दा रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने अपने वाइस कैप्टन शॉद शकील को ड्रॉप किया था, खिलाया नहीं था ओडीआई सीरीज में. लेकिन हम तो पाकिस्तान है नहीं, हम तो इंडिया है. ऑब्वियसली नहीं है, बट वी कैन टेक अ क्यू ना इफ वी वांट. को भी हो सकता है। I don't think a vice captain will ever get dropped. Oh, so you are saying Shubman will have to sit out. खास But करके but इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब मतलब सब कॉन्टिनेंट टीम में तो वाइस कैप्टन कोई सवाल ही नहीं होता है। पूछा भी नहीं जाता था। अरे मैं कुलदीप यादव ने 8 विकेट लिया और अगला मैच में ही इज गेट ड्रॉप्ड। आप कौन ये बात सामने एग्जांपल है, कौन ये कुलदीप बात यादव छोड़ 8 सकता विकेट है? लेके बांग्लादेश के खिलाफ जिताया एंड द चलो नेक्स्ट guys, ही गेट्स ड्रॉप्ड। yes. I think Joyda, before you go, New Zealand series, India New Zealand series, your prediction, quick prediction, ODI and T20. close, very close. India winning one, New Zealand winning one. Oh, Amit bhai, quick मेरे one, हिसाब jaldi से से. न्यूजीलैंड का हाथ पर है दोनों ही फॉर्मेट में। Okay, Devashish da, I reckon that India will win both the series. India will win both the series. Thank you, And gentlemen. I think that's enough. We have covered all the talking Thank you. points and we'll continue to cover more. Thank you, everyone, for joining in. And don't forget to subscribe to Red Sports. Thank you so much. thank you Thank very you. much.